Hi guys, Namaste. Welcome back to Ankinish Creations. Oh my God, कितना time हो गया. I have not said this and I have not recorded a video for YouTube. But here I am. I'm back. Actually मैंने last video I think अक्टूबर में डाला था. And उस time मेरा first solo art show चल रहा था. तो उस समय मेरे पास एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो था तो आई एडिटेड दैट एंड अपलोडेड दैट. उसके बाद मैंने और भी वीडियोस रिकॉर्ड किए लेकिन मैं उनको एडिट करके अपलोड नहीं कर पाई. एंड क्योंकि आर्ट शो के बाद फिर देयर वर मैनी मोर इवेंट्स व्हिच वर कमिंग अप. उसके बाद दिवाली आ गई, फिर उसके बाद क्रिसमस आ गया एंड देयर वर सो मेनी एग्जीबिशंस एंड डिफरेंट थिंग्स व्हिच वर कमिंग अप एंड आई वाज नॉट एबल टू एडिट अ वीडियो. और एक पॉइंट के बाद ना इतना ज़्यादा टाइम निकल गया कि आई वाज लाइक मैं एकदम से अब क्या डीआईवाई वीडियो डालूं बीच में. तो ये दिन का इंतज़ार करते करते कि मैं एक थोड़ा नॉर्मल सा वीडियो शूट करूं, कुछ इंट्रो टाइप का या कमिंग बैक टाइप का और ये सारी स्टोरी बताऊं, फिर मैं वापस डीआईवाई वीडियो डालना शुरू करूं. सो हियर आई एम बैक एंड होपफुली मैं वापस गायब नहीं हो जाऊं. आई विल ट्राई कि मैं वापस गायब नहीं हूँ. और मैं बहुत मिस कर रही थी आप लोगों के सारे कमेंट्स में रीड कर रही थी बट आई वाज नॉट रिप्लाइंग क्योंकि मुझे ऐसे हो रहा था वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ. और एक वो फ्लो बनता है ना, तो देन इट इज इजी टू रीड द कमेंट्स एंड रिप्लाई टू देम इमिडिएटली. कुछ कुछ को मैं रिप्लाई कर रही थी बट कुछ को नहीं कर रही थी. बट आई वॉज रीडिंग ऑल योर कॉमेंट्स एंड थैंक यू सो मच. मतलब वेट करने के लिए भी बिकॉज यू डोंट हैव टू, बट स्टिल थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. एंड इस वीडियो में आई विल ऑल्सो शो यू कपल ऑफ क्लिप्स जो मैंने आर्ट शो के टाइम पे रिकॉर्ड किए थे. आई वॉज ट्राइंग टू मेक अ वीडियो फॉर दैट आर्ट एग्जीबिशन बट it was not possible to make a video throughout. but थोड़े थोड़े clips जो मैंने लिए हैं I will add that to this video and show you all how I set up for my first solo art show here in Ireland. It was so cool, such an amazing experience. मतलब एक वो आर्टिस्ट वाली फीलिंग आ रही थी. मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मुझे लर्न करने को मिला उस आर्ट शो से. एंड कैसे अपने आर्ट वर्क्स को प्रेजेंट करना है, कैसे उनको टाइटल देना है एंड ऑल दैट. सो आई विल एड दैट क्लिप हियर. एंड आज काफ़ी स्टॉर्मी वेदर है यहाँ डबलिन में. बहुत विंडी और बहुत रेनी है. बट रात को मैं सोच के सोई थी कि कल मैं वीडियो रिकॉर्ड जरूर करूंगी. तो भले लाइटिंग थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आई थॉट कि नहीं, आज तो रिकॉर्ड करना है एंड आई एडिट दिस अप टुडे सो दैट आई कैन अपलोड इट टुमारो. So yeah, I hope you are excited to watch my videos again, and thank you so much for waiting for me and showing all your love and support to me. Thank you so much. I was not able to make videos, but I was doing a lot of painting. मतलब videos नहीं बना पा रही थी लेकिन art नहीं रुका था. Painting was going on. I have started doing more like big paintings and custom orders and all that. So थोड़ा सा बिजी हो गई थी बट आई ट्राई टू मैनेज नाउ कि मैं वीडियो भी डालूं और पेंटिंग्स तो बनती रहेगी. एंड मैं फेब में वी आर गोइंग टू इंडिया, तो वो भी एक महीना वी विल बी एक मोर देन 1 month विल बी देयर. सो आई ट्राई टू मेक सम extra videos पहले से. and if I can I will edit and schedule them. Hopefully I don't take a break now. I don't miss any videos. Mostly I'll try to upload 1 video per week. उससे ज़्यादा तो I don't think I'll be able to do right now, but I'll be happy to if I upload even 1 video per week for you guys. And shorts वाले video छोटे छोटे वाले तो आते रहेंगे because they are very easy to make. So that's a relief के कुछ तो डाल सकते हैं. So yeah, and yeah, I also made so many new paintings recently in this past
4-5 months. कुछ तो मेरे पास है भी नहीं अब, they got sold, but I have pictures of them, so let me know if you want to see a video where I show my recent paintings as I have done in past. Like I think मैंने एक दो वीडियो वैसे बनाए हैं. So yeah, let me know. I will be happy to shoot that as well. And next video will be a painting video. So yeah, stay tuned for that. And also next will be coming the clips of my art show which I did in October 2022. And yeah, सो दिस वॉज द इन्विटेशन जो मैंने अपने आर्ट शो के लिए बनाया था. इसमें सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी एंड ये मैंने एक पैम्पलेट जैसा बनाया था जिसमें थोड़ी और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन थी. एंड दीज वर ऑल द आर्ट वर्क्स जो मैं इस आर्ट शो के लिए लेके गई थी. सो मोस्ट ऑफ मतलब मेरे इंडियन आर्ट से इंस्पायर्ड आर्ट वर्क्स का ही शो किया था. तो these are all the artworks and here I am on my way to library. This was our local library. बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है and यहाँ पे मेरा आर्ट शो like my first art show happened and यहाँ पे as you can see I am setting up my space. मैंने पहले कभी नहीं किया था तो but I was happy, बहुत easily setup हो गया था. The library people were so helpful and this is how all the space was looking like. and जो छोटे छोटे pieces थे वो एक glass box जैसा एक था उसमें डाल के डिस्प्ले किए थे. सो या दिस वाज लाइक मैंने इंस्टाग्राम पे रील बनाई थी तो मैंने यहाँ पे वो भी ऐड कर दी ताकि सारे आर्ट वर्क का एक क्लोजअप आप लोगों को भी देखने को मिल जाए. एंड दिस वाज माय आर्ट शो. that's it for today. Please give this video a big thumbs up, like this video, comment down your thoughts because वापस इतने टाइम बाद I have uploaded a video तो I know कि उसकी reach बहुत कम होगी, but if you guys can help me out it would be so much awesome and amazing for me. So yeah, I'll see you soon. Bye. Love being creative. Bye bye.